In this particular video lecture, I'm going to discuss about unit cells, types of unit cells, number of constituent particles present per unit cells, and last, I'll discuss about packing efficiency of a unit cell. Unit cell is the smallest repeating unit which when repeated over and again in three-dimensional space in random directions completes the crystal lattice. Unit cell is of two types, primitive or simple and centered. Considering unit cell a perfect cube, a primitive unit cell is one in which constituent particles occupy all the 8 corners. Okay, particles are present only at the corners. And the centered unit cell is one in which constituent particles occupy corners and are also present at some other spaces. Okay. On the basis of constituent particles present on other spaces, centered unit cell is further divided into three categories: body-centered cubic unit cell, face-centered cubic unit cell, and end-centered. First category consider करते हैं बेटे. First is body-centered. In body-centered unit cell, constituent particles are present at corners 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 corners and also body center. One atom, one constituent particle is present at body center. I hope you know what a body center of a cube is. It's a point where diagonals of a cube intersect. Okay? This is body center. Where the particles are present at corners, CP constituent particles are present at corners and body center. Okay, this is A, B. In face-centered unit cell, constituent particles occupy all the corners of the cube. Along with corners, constituent particles also occupy centers of faces. Okay, faces कितने होते हैं क्यूब के? 6. So constituent particles present at corners and also centers of each face. ऊपर वाले फेस का सेंटर कहाँ पे हो गया? This one, side, this one, back side, approximately here, bottom, this one, right hand side wala, this one, and front, this one. Okay, so the constituent particles occupy corners and centers of each face. See, third category is end-centered cubic unit cell. In this type of unit cell, constituent particles occupy corners
of the cube plus any two centers of opposite faces. So corner as it is कर दो जैसे पहले करे थे. Considering one particle is present at the center of top face, next particle will be present at the center of bottom face. Any two opposite faces. Okay, this is about where the constituent particles are present in various types of unit cell. The next topic for the day is counting the number of constituent particles per unit cell. So first case जो discuss करना है, it is the number of constituent particles of CP per unit cell in case of primitive unit cell, simple unit cell. Okay. As you know, in primitive unit cell, constituent particles occupy only corners of the cube, one, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. One corner of this cube, one corner of a cube is shared with dash cubes. Can you guess how many cubes? Consider this corner. Okay, or let us suppose you are sitting in a cubicle room and consider any corner. कोई भी corner think करो बेटे, जिस भी रूम में आप बैठे हो एक corner ले लो. अगर वो cubicle या और वाइडल रूम है, एक corner ले लो. वो particular corner कितने रूम्स के साथ शेयर हो सकता है? देखो ये गेस करके हेल्प मैं कर देता हूँ थोड़ी सी. यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, सपोज यू आर सिटिंग इन दिस रूम, ये हो गया, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कॉर्नर, दिस वन, यहाँ पे. ठीक है, इट इज शेयर्ड विथ, काउंट करो, 1 यहाँ पे आप बैठे हो, साथ वाला रूम, एक आपके डायगोनल होएगा 3, एक बैक साइड 4. काउंट कर पा रहे हो? अगर इमेजिन कर पा रहे हो वहाँ पे, देन इट्स परफेक्ट. अदरवाइज यहाँ पे देखो बेटे, मैं इस कॉर्नर की बात कर रहा हूँ, इसकी. ठीक है, दिस कॉर्नर इज शेयर्ड विद दिस क्यूब. 2 हो गए. एक और देखो, इसके साथ भी कॉर्नर शेयर हो रहा है, वो पर्टिकुलर कॉर्नर है ना, इसके साथ भी हो रहा है. कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 इस कॉर्नर की. ठीक है, लेकिन अभी ओवर नहीं है. यहाँ पे देखो, इसके ऊपर भी, इसके साथ भी वो पर्टिकुलर कॉर्नर शेयर होएगा. दिस वन 5, इसके साथ भी हो रहा है वो नीचे वाला कॉर्नर. 6 अभी भी है, होपफुल इट इज विजिबल टू यू. 7 हो गए, एंड लास्ट इज दिस. ओके, इसके नीचे जो कॉर्नर था. सो इन अ क्यूब, one corner is
shared with 8 cubes. Okay, so one corner is shared with how many cubes? 8. 8 cubes. Okay, therefore contribution of one cube, one corner is 1 by 8 because it is being shared with 8 cubes. Number of corners, eight. Therefore, number of particles per unit cell कितने हो गए बेटे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल 1 by 8 into 8. Contribution of one corner multiply with the number of corners. Answer is 1. ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद सिंबल Z. So you can say Z equal to 1 in case of simple unit cell. ठीक है, देख लो, नोट कर लो स्क्रीन पे ये आपके. Next type is, students, body centered unit cell. In body centered unit cell, constituent particles occupy corners and the body center. Now contribution from the corner is, अभी जो लास्ट केस में काउंट करें वही होगी. इट इज़ 1/8 into 8 equal to 1 and contribution of a body center is 1. body center है वो जो diagonal यहाँ पे intersect कर रहे हैं. That is the body center of a cube which cannot be shared with any other cube. So एक ही body center है, only one cube is having that body center. So क्या हो गया ये? 1 into 1 equal to 1. Okay, so number of constituent particles per unit cell in this case कितने हो गए बेटे? 1 contribution from corners plus contribution from body center. 1 plus 1 2. Okay, this is the case of body centered. Next is FCC. FCC is number of constituent particles per unit cell in case of face centered cubic unit cell. In face-centered cubic unit cell, constituent particles are present at the corners and at the centers of each face. ठीक है, 6 faces होंगे. So contribution from corner as it is 1 जैसे पहले थी. Contribution of one face is half. If half कैसे आई? जो भी क्यूब है या जो आपका रूम है, कोई भी वॉल देख लो, वो कितने रूम्स के साथ शेयर हो रही है? एक तो जिसमें आप बैठे हो वहाँ पे होएगी एंड वन पर्टिकुलर वॉल के अक्रॉस जो रूम है उसके साथ. दैट्स इट. 2 ही रूम हो सकते हैं, एक वॉल शेयर कर रहे हैं. सो contribution of one face is half, 1/2.
total number of faces 6. So total contribution of all the faces कितनी होगी? Total contribution of all the faces is 6 into half equal to 3. Okay. Therefore, number of particles per unit cell is 1 plus 3, 4. So in this case, Z is 4. Next case is of end-centered unit cell. In end-centered unit cell, constituent particles occupy corners and any two opposite faces. Just like this. Green one, इस पे concentrate करो. एक wall पे center में present है. One particle, second is on opposite side. ठीक है. Corners contribution is 1 by 8 into 8 equal to 1. Contribution of two faces is half into 2, 1. So number of particles in end-centered unit cell Z equal to 1 plus 1, 2. Okay. So extract क्या है? एक बार मैं बोल के बता रहा हूँ. What is the number of particles in simple unit cell? It's 1. Number of particles in body-centered unit cell 2. Number of particles in face-centered unit cell 4. Number of particles in end-centered unit cell 2. Okay. Next, on the basis of this, a question, consider a compound made up of atoms of element A and B. Atoms of A occupy corners, all the corners, and atoms of B occupies all the face centers. Question is, predict the formula of this compound. कुछ options given हैं, AB, A2B, etc. etc. Okay. इसे बेटा solve कैसे करोगे? यहाँ पे देखो क्या हुआ है, number of atoms of A per unit cell equal to 1 by 8 into 8 equal to 1. A के ठीक है, because atoms of A are present at corners only. 1. ठीक है. Similarly, atoms of B occupy face centers and one face center has contribution of half. We have done this earlier. Half into total number of faces 6, half into 6, 3. So formula of this compound is A, B, 3. Okay. Similarly, one more. The compound is made up of atoms of X, Y and Z. Atoms of X occupies corners, Y occupies body center, and atoms of Z occupies face center. What is the formula of this compound? Student, X, since atoms of X are present at corners, so number क्या हो जाएगा? 1. 1 by 8 into 8 equal to 1. से याद रखना 1. Body center एक ही होता है 1. So it's X1, Y1. And Z face centers पे है. Face center half into 6. 3. Z आ गया 3. So what is the formula of this compound? It's X1, Y1, Z3. X, Y, Z, 3. Okay. So you can try different combinations. एक और देखो question. This.
question number 3. In this particular question, atoms of A occupies 7 corners. This one is important. 7 corners. And atoms of B occupies all the face centers. What is the formula of this compound? Solve करते हैं बेटे. Since atoms of A occupies corners, 7 corners only, so number of atoms of A per unit cell equal to 7 into 1 by 8. It becomes 7 by 8. And atoms of B occupies all the face centers. ये क्या हो गया? 6 into half equal to 3. B3. So formula is A7 by 8 B3. Okay, check करो option. A7 by 8 B3 कोई नहीं है, so 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. Okay, फ्रैक्शन में नहीं रखना, 8 से मल्टीप्लाई करो पूरे मॉलिक्यूल को. क्या बन जाएगा ये? A7 3 into 8 24. A7 B 24. This option is correct. C. Okay. Next is packing efficiency of solids. The packing efficiency है क्या चीज़ है? Packing efficiency का यहाँ पे मतलब है it's actually the fraction of volume of the unit cell which is actually occupied by the constituent particles. ठीक है. सपोज ऐसे यूनिट सेल को हम कंसिडर कर रहे हैं क्यूब, एंड एटम्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वी आर कंसिडरिंग देम एज स्फीयर्स. अब अगर एक रूम है, क्यूबिकल रूम है, उसमें फुटबॉल्स फिल करनी है, जितनी मर्जी फुटबॉल्स फिल कर लो, क्या 100% वॉल्यूम उसके साथ आप ऑक्यूपाई हो जाएगी उस रूम की? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. ऐसा नहीं होएगा ना. कुछ वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब, ऑफ दैट रूम रिमेन अनऑक्यूपाइड. ठीक है, हमने वो कैलकुलेट करनी है इस पर्टिकुलर टॉपिक में. कितनी परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एटम्स और कितनी रिमेन अनऑक्यूपाइड. ठीक है, फर्स्ट केस करेंगे. फर्स्ट इज द पैकिंग एफिशिएंसी of simple unit cell. पहले देखो सिंपल यूनिट सेल वगैरह से ड्रॉ करते हैं इसे. In simple unit cell, atoms are present at corners. So corners fill करो atoms. सही है. पॉइंट्स लेवल कर रहा हूँ मैं. Let this point be A, this be B. Edge length of this cube is small a. ठीक है.
let radius of let radius of sphere be r. Edge length is a and radius of the sphere is r. से कुछ सब पार्ट्स में डिवाइड करूंगा इस डेरिवेशन को. फर्स्ट इज रिलेशन बिटवीन a and r, radius and edge length. डायग्राम में दोबारा बना रहा हूं. ए बी सिर्फ ये है ए, वन इज बी, ए बी. ठीक है. इन एक्चुअल एटम्स ऑब्वियसली आपस में टच कर रहे होंगे. ठीक है. सो इसे बनाया है. इस पोर्शन को यहाँ पे लिख रहा हूँ. एज लेंथ इज ए और यहाँ तक अगर हाफ लें तो ये कितना बन गया बेटे आर, और ये दूसरा डिस्टेंस भी कितना है आर. ठीक है. सो वी कैन से फ्रॉम डायग्राम we have a is equal to 2r. Make this equation 1. Okay. इस पॉइंट को मैं a लिख लेता हूँ. b is volume occupied let it be v1. ठीक है. वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स. और एटम्स क्या स्फीयर आपने इमेजिन सपोज करे थे स्फीयर स्टार्टिंग में. वो अजम्पशन ध्यान में रखनी है. एटम्स क्या हैं? एटम्स आर परफेक्ट स्फीयर्स. सो अगर एटम स्फीयर्स हैं सो v1 क्या हो जाएगा? v1 इज 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है. v1 is 4/3 pi r cube. That is the volume of a sphere. C part is total volume available. Let it be v2. v2 is volume of cube. Obviously total volume available कितनी है? Total volume available is volume of this cube which is equal to a cube. ठीक है. Put the value of a. It's a 2r cube. ये कहाँ से आया 2r cube? This from equation 1. ठीक है. यहाँ से सो v2 क्या हो जाएगा? v2 इज 8r क्यूब. v2 इज 8r क्यूब. लास्ट इज पैकिंग एफिशिएंसी. Packing efficiency is equal to volume occupied divided by total volume v1 volume occupied upon total volume into 100, which is equal to volume occupied was 4/3
pi r cube divided by 8 r cube into 100. When you solve this, you'll get the answer approximately equal to 52.4%. Okay, so packing efficiency in case of simple or primitive unit cell is 52.4%. Okay, students, I'll calculate the packing efficiency for face-centered cubic unit cell and body-centered cubic unit cell in my next video lecture. Say revise karna, this one is important. Okay, best of luck. Thank you.